Yep, we are. Okay, so yeah, we're live. That's good. So this is the topic that we'll be doing today. Hasnan says hello, hello, Hasnan. How are you today? Zubair says it's his first class today. So where are you from, Zubair? Do tell me where you're from. Okay, guys. So this is what we'll be doing today. Today, the topic is this is the first topic that I'll be teaching you, and it's subject and predicate. ओके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आज हम करेंगे तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि आई बी स्पीकिंग मोर इन इंग्लिश एंड अ लिटिल बिट इन उर्दू इंग्लिश में ज़्यादातर ये क्लास होगी और थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा कि मैं उर्दू में भी हो जाए ताकि जो है वो सबको जो है वो साथ लेके चल सकें ठीक है कल हमने इस बारे में एक छोटा सा पोल किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि यू नो व्हाट लैंग्वेज यू वांट मी टू स्पीक सो देयर वर मोर वोट्स फॉर me being bilingual so that's what I'm going to do in this class so before this presentation so subject and predicate um, some of you might already know about what a subject is and a lot of you might not know about predicate usually we don't teachers students are not taught about predicate but they are taught about subject what a subject is so this is what we'll be doing today I'll be teaching you what a subject is and what a predicate is but before I do that before I teach you what a subject is uh, I want to ask from you I would like to know from you what you think a subject is. Mehwish Asif says, Assalamu alaikum, sorry, walaikum assalam, Mehwish, welcome to the class. So, what do you think what a subject is? What's your opinion about subject? What you think a subject is? जी आपके ख्याल में क्या है सब्जेक्ट क्या होता है किसको कहते हैं सब्जेक्ट एक बहुत अमूमी सी चीज़ है जो कि जैसे ही आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं सबसे पहले यही चीज़ आती है आमतौर पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं tenses के मुख्तलिफ so उसमें subject verb and object so this is the first thing that you encounter this is the first thing that you usually learn what a subject is and this is what we'll be doing so what do you think nobody's telling me you can tell me in the chat use the chat tab आप chat tab का इस्तेमाल कर सकते हैं मुझे बताने के लिए कि subject क्या है कोई मसला नहीं है it doesn't matter if you make a mistake everybody makes mistakes and that's why you're here to learn so if you make a mistake that's not a problem okay I want you to tell me what a subject is yes please what do you think is a subject subject क्या होता है किसको कहते हैं subject जी जनाब तो बहुत से मुझे नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स क्लास के अंदर लेकिन कोई भी बताना पसंद नहीं कर रहा आतिफ हैं और खिंजा हैं जी खिंजा क्या ख्याल है अजीमा हैं और सहर हैं इसी तरीके से हिना हैं अदील हैं और राजवली हैं शुमाइला हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त लेकिन बता कोई नहीं रहा चैट में आप मुझे बता सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है अच्छा जी अच्छी बात है now I have begun receiving your responses Zubair says a person or thing that we talk about in a sentence okay Azima says doer of an action Seher says a person who do action Adil says subject is actually a noun or a pronoun. Yeah, who do some action. Okay, now this is what people usually think, and the doer of an action. That's not entirely true. Actually, that's not entirely correct. That is 50% correct. ये जो हम कहते हैं ना कि doer of an action, ये मुकम्मल सही नहीं है ये जो तारीफ हम बयान करते हैं जब बताते हैं आमतौर पे सबके जहन में यही होता है कि the doer of an action. That's not true. Now, actually, the doer of an action is not a subject. Actually, there is something more to it. इसके अंदर कुछ और भी बात मौजूद है. ठीक है. अच्छा देखें. Whenever you talk, what do you do? Whenever you talk, it's always about somebody, someone or something, some place. It's always about something. जब कभी भी आप बात करते हैं तो अगर आप कभी अपना जब आप बोलते हैं तो आप उसको अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि it's always about something or somebody. ठीक है जब कभी भी आप बात करते हैं तो वो किसी न किसी के बारे में होती है अब बहुत सारे जुमले जैसे हम बोलते हैं सो उसमें क्या होता है हम आमतौर पे समझते हैं वी थिंक दैट द डूअर ऑफ एन एक्शन इज अ सब्जेक्ट बट दैट्स नॉट ट्रू लाइक आई सेड बिफोर there are sentences sometimes we don't talk about action sometimes we talk about states what something is what somebody is
a lot of times we don't mention actions. बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है, हमारे जुमले ऐसे होते हैं जिसमें हम नहीं बताते कि कोई शख्स क्या कर रहा है, हमसे बताते हैं कोई शख्स कैसा है, कोई चीज़ कैसी है, हम ये बताते हैं। ठीक है? तो फिर जो लोगों के ज़हन में बैठी हुई है डेफ़िनेशन, ये तारीफ़ कि जी द डूअर ऑफ एन एक्शन, तो ये तो गलत साबित हो गई ना। क्योंकि अगर कोई एक्शन नहीं है तो क्या होगा? अगर किसी कोई जुमला आपने बोला है या लिखा है, सो उसमें कोई एक्शन नहीं है, तो क्या उसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होगा? क्योंकि आपकी जो डेफ़िनेशन है, जो तारीफ़ आप बयान कर रहे हैं, उसके मुताबिक तो डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट होता है। अब अगर एक्शन ही नहीं है तो फिर सब्जेक्ट भी गायब हो जाएगा, है ना? देखिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ ही इज़ अ डॉक्टर, he is a doctor. So he, who am I talking about? What's the subject? आप कहेंगे, what is the subject? Okay. He is a doctor. What is the subject in this sentence? इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? किस चीज़ को आप कहते हैं सब्जेक्ट? अदील कह रहे हैं ही सब्जेक्ट है, सहर कह रही हैं ही सब्जेक्ट है, ज़ुबैर भी कह रहे हैं ही सब्जेक्ट है, हिना खातून कह रही हैं ही, हस्सान कह रहे हैं ही, अज़ीमा कह रही हैं ही, बिल्कुल सही है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि डॉक्टर सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल गलत है। वजह इसकी क्या है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डॉक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट ही, about a person, about a man, and we're using a pronoun. Now, there is no action. Is there an action in this sentence? Yes, please. Is there an action? And for those of you watching us on YouTube and Facebook, you can type that down in the comments. You can also join this class by clicking the link in the description. Yes, please. So, what do you think? Is there an action in this sentence? इस जुमले में कोई एक्शन है? किसी काम की बात हो रही है? हम बता रहे हैं जब हम ये कि ही इज़ अ डॉक्टर, इसमें हम बता रहे हैं कोई एक्शन है इसके अंदर? किसी एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं? नहीं। There is no action. अदील कह रहे हैं no, yeah, and he's right. There is no action. So what's actually happening is that I'm just telling about who he is. I'm telling you who he is, about his present state. That's what I'm doing. हम बता रहे हैं कि कोई शख्स कैसा है, ठीक है, क्या है. So another example, America is a country. Now in this sentence, what am I talking about? What's my subject? What's the subject in this sentence? Yes, please. इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? अब क्या आप बता सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है? जी, सहर कह रही हैं अमेरिका, अदील, मुबश्शिर, अज़ीमा सब बिल्कुल अमेरिका. That's right, America. America is the subject. So, most of the time people think that he, she, it, I, you, we, they, or a person. A lot of times, a lot of students think that a living person is a subject. That's not true. बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़हन में ये बात होती है कि कोई बंदा या कोई बंदी या लोग सिर्फ़ वही सब्जेक्ट होते हैं, बाकी कोई चीज़ जो है या कोई जगह या कोई जानवर या कोई जगह या कोई भी चीज़ वो सब्जेक्ट नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत सोच है। ज़हन में रखें, इट डज़न्ट मैटर what you talk about or who you talk about. Even it's a place, like America is a country, it's a place, right? So what am I talking about is important. I'm talking about America. मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये चीज़ अहम है. तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. इस जुमले में बात किसकी हो रही है? अमेरिका की बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट है. अच्छा देखिए हम ये कर क्यों रहे हैं? व्हाई आर वी लर्निंग? व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? क्यों है ये चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी कि सब्जेक्ट क्या होता है? ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये क्यों है ज़रूरी? व्हाई व्हाई डू वी नीड इट? देखें, जब कभी भी आप बात करते हैं, व्हेनेवर यू टॉक टू समबडी, you always mention who or what you talk about. That's the first thing you mention. जब कभी भी आप किसी से बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप उस चीज़ का ज़िक्र करते हैं, उस बंदे का ज़िक्र करते हैं, उस जगह का ज़िक्र करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उस जगह का या चीज़ का या उस बंदे का, जिस किसी के भी बारे में आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसका नाम लेते हैं. This is how it works. कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि whenever we begin to speak, it's totally blank. We don't know what to say. कुछ लोग बात करते हैं, जब इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं, कहते हैं हमारा दिमाग जो है ना बिल्कुल खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या बोलें, बोलने लगते हैं. तो देखें ये इसलिए होता है क्योंकि आपने बोलने से पहले ये तय नहीं किया, आपके ज़हन में ये बात नहीं होती कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं. So this is the most important thing. Take a moment before you speak. Take a moment, right? You don't have to rush into your conversation, whoever you're talking to. Take a moment and think about what you want to talk about, and then begin your sentence with that, whatever that thing. That might be that might be a place, that might be a thing, that might be a person, it could be anyone, anything. सो बोलने से पहले ज़हन में इंसान की ये होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके लिए जुमला बनाना आसान हो जाएगा. होता क्या है, आपके ज़हन में आमतौर पे जो लोग बोलते हैं, वो क्या करते हैं, जो सबसे पहली चीज़ आती है ना ज़हन में, ज कुछ भी आ जाए, उ उस वो बोल के खामोश हो जाते हैं पहले तो, वो बोल देते हैं.
और उसके बाद फँस जाते हैं। अब जुमले की तरतीब क्या करें भाई? तरतीब ये होती है कि सबसे पहले यू नीड टू मेंशन द सब्जेक्ट। दिस इज़ हाउ यू मेक इंग्लिश सेंटेंसेस। इंग्लिश के जो जुमले बनते हैं ना अमूमी तौर पे, यूजुअली यू मेंशन द सब्जेक्ट फर्स्ट, हूएवर यू टॉक अबाउट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का ज़िक्र करते हैं। ये एक बहुत ही अहम चीज़ है, जब आप बोलना चाहते हैं तो ज़हन में रखें, सबसे पहले उस चीज़ का नाम लें, उस शख्स का नाम लें, उस जगह का नाम लें, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है? लेट्स मूव ऑन। John is a teacher. Here in this sentence, I'm talking about teacher, or am I talking about John? What am I talking about? Who am I talking about? किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? जी। ओके, सहर कह दिए, जॉन, हिना, अदील, ज़ुबैर, अमीर, हमज़ा, हसन, कामरान। दैट्स रियली गुड। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप भी इसमें पार्टिसिपेशन कीजिए। अगर आप सिर्फ पैसिव लिसनर बन के सुनते रहेंगे तो जैसे अब तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस क्लास से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट यू पार्टिसिपेट, जस्ट मेक सम एफर्ट्स, ओके? दैट्स इम्पोर्टेंट। Now, John is a teacher. We're talking about John. Yeah, that's right. Who are we talking about? We're talking about John. This sentence is about John. अगर देखें, अगर हम टीचर से जुमला शुरू कर दें तो फिर बात किसकी हो रही होगी उस सूरत में? फिर टीचर की बात हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? जॉन की बात हो रही है, इसलिए हमने सबसे पहले उसको मेंशन किया है। जॉन, इस जुमले में बात किसकी हो रही है? जॉन, एक बंदा है, एक शख्स है, जॉन उसका नाम है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? हम इस जुमले में एक इंसान की बात कर रहे हैं, एक आदमी की बात कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन। Now, so that means subject is actually who or what we talk about. Subject क्या होता है? Subject उसको बोलते हैं who or what you talk about. जिस किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। चाहे वो कोई बंदा हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई एहसास हो, anything. For example, love is important. What am I talking about? Love, right? Love. So मैं अगर love की बात करूँ तो that's my subject. Love is important, right? So subject is who or what you talk about. जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। डूअर ऑफ एन एक्शन को सब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है? यानी कि उसको भी बोलते हैं लेकिन वो हमारी मुकम्मल जो तारीफ है, दैट्स नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, द राइट डेफिनेशन, बिकॉज़ देयर आर सेंटेंसेस, देयर आर टाइम्स व्हेन वी don't talk about someone's actions. Sometimes we talk about what somebody is, what something is. In that case, when there is no action, we still have a subject. तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है लोगों के जहन में कि डूअर ऑफ एन एक्शन को सब्जेक्ट बोलते हैं, गलत है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। Now, this man has a lot of money. Now, this man has a lot of money. In this example, I'm talking about this man. So the subject is this man. And there's no action in this sentence. You can see there's no action. I'm just talking about somebody. I'm telling about a man that what he possesses. मैं बता रहा हूँ इस जुमले में किसी शख्स के पास क्या है। सब्जेक्ट क्या है? दिस मैन, क्योंकि बात किसकी हो रही है? दिस मैन की। इसी तरीके से माई बाइसाइकिल इज वेरी एक्सपेंसिव, किसके बारे में बात हो रही है? माई बाइसाइकिल। सो द सब्जेक्ट इज माई बाइसाइकिल। देयर इज नो एक्शन इन दिस सेंटेंस ईदर। इस जुमले में भी कोई एक्शन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अपनी बाइसाइकिल के बारे में, माई बाइसाइकिल इज द सब्जेक्ट। Mangoes are sweet. Look at this one. Mangoes are sweet. So what am I talking about? Mangoes. Mangoes. This is the subject. And there's no action here either. You can see. I'm just telling you about the state of mangoes, what mangoes are, what they're like. They're sweet. Jack exercises every morning. Now, in this example, what am I talking about? Who am I talking about? I'm talking about Jack. And exercises every morning. Exercises. Look at this verb. Now, this is an action. In this example, I am using an action verb. Jack exercises. Now, I'm talking about Jack and telling you what he does. Exercises every morning. So exercises is a verb. Now, yeah, that's right. But it's still, what's the subject? Jack is the subject because the sentence is about Jack. I get up early. Who am I talking about? I. Am I talking about my state? How I am, what I am? No. क्या मैं अपनी स्टेट की बात कर रहा हूँ कि मैं क्या हूँ? नहीं. I'm talking about what I do. I get up. Get up is an action. Get up is an action, right? So
Like I said, who or what we talk about is the subject. Now, predicate. How many of you can tell me what a predicate is? What do you know about predicate? Just remember, you're not allowed to search online. If you're searching online and typing here, now that's cheating, okay? So predicate क्या चीज़ होती है? आप में से कितनों ने सुना है कि predicate कोई चीज़ होती भी है? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता, क्योंकि आमतौर पे जो हमारा सिलेबस है पाकिस्तान में, we don't teach predicate that much. So how many of you know what a predicate is? So Adil says some action toward object. It gives us information about a subject, talking about the subject. Okay. Zubair is right. That's right. I don't know, sir. Sahir says no problem. That's what we're doing. I'm gonna tell you later on. Yes. Anyone else? What about the rest of you? Come on, participate. It's a class, right? So, okay. So predicate. Now the information about the subject. That's right. The information about the subject is predicate. Now, why is that important to know what a predicate is? What happens, like I said before, whenever you talk, anytime you talk, anytime you talk, you talk about something or someone. You talk about something or someone, right? And you tell something about that something, that you provide some information about that person, about that thing. So that information is actually your predicate. ओके देखें जब कभी भी आप बात करते हैं कोई भी बात करें इंग्लिश में करें उर्दू में करें पंजाबी में करें अरबी में करें किसी भी ज़बान में आप बात करें तो ज़ाहिर सी बात है जब कभी भी आप कुछ बोलेंगे तो जो भी जुमला आप बोलेंगे वो लाजमी तौर पे किसी न किसी शख्स के बारे में होगा किसी चीज़ के बारे में होगा किसी जगह के बारे में होगा किसी जानवर के बारे किसी के बारे में बात होगी और जो बात हो रही है जो आप बता रहे हैं जो मालूमात आप फ्राहम कर रहे हैं अब ज़ाहिर सी बात है आप किसी शख्स का नाम ले लें मिसाल के तौर पर अमेरिका अब हम बोल रहे हैं अमेरिका भाई ठीक है आगे भी तो बोलो आगे क्या अमेरिका क्या so you need to provide some information. So whenever you talk about something or somebody, you provide some information about that something or somebody. जब कभी भी आप बात करते हैं जिसके बारे में भी बात करते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात फराहम करते हैं तो जो मालूमात आप फराहम करते हैं जो मालूमात आप जुमले में बोल रहे हैं या लिख रहे हैं that is your predicate. Okay, so let's move on to the next slide. He is a doctor. He is the subject, and what is the information I'm providing? What is the information about he? Is a doctor. That is the information. So all of it, not just doctor, Hassan, not just doctor. Doctor is not the information. All of it is a doctor. That's your predicate. Is a doctor is your predicate. And the most important part of predicate is the verb. ठीक है जो सबसे अहम हिस्सा होता है प्रेडिकेट का वो क्या होता है वो वर्ब होता है अब जितनी भी मालूमात है चाहे वो कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डजंट मैटर हाउ लेंथी दैट इज हाउ लॉन्ग दैट इज सब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपको मालूम है कि दिस इज द सब्जेक्ट अब जो कुछ भी मालूमात है एवरीथिंग द होल इंफॉर्मेशन इज योर प्रेडिकेट राइट. That's your predicate. So is a doctor is predicate because that is the information we're providing about he. America is a country. I'm talking about America. America is my subject. What is the information I'm providing about America? What am I telling about America? What I want to tell about America in this sentence is a country. This is the information. So this is my predicate. All of it is a country, not just country, not just is a country. The most important part of a predicate is the verb in it. जो सबसे अहम हिस्सा होता है ना predicate का वो verb होता है पूरी की पूरी जो मालूमात है वो predicate खिलाएगी. This man has a lot of money. What's the subject? Who am I talking about? This man. So the subject is this man. What is the information? Has a lot of money. So all of it is my predicate. Has a lot of money is the predicate. Information क्या दे रहे हैं हम इस आदमी के बारे में has a lot of money. So has a lot of money. Just money नहीं होगा predicate. A lot of money नहीं होगा बल्कि has a lot of money. क्योंकि जो predicate का सबसे अहम हिस्सा होता है वो क्या होता है verb. My bicycle is very expensive. I'm talking about my bicycle. So my bicycle is the subject. What is the info? What am I telling you about my bike? That is very expensive. So that's my predicate. मैं अपनी बाइक के बारे में क्या बता रहा हूँ क्या मालूमात फराहम कर रहा हूँ आपको
मैं बता रहा हूँ अपनी बाइक के बारे में आपको कि ये बहुत महंगी है, बहुत महंगी है. So is very expensive is the predicate. Mangoes are sweet. I'm talking about mangoes. That's my subject. What is the information about mangoes that I'm providing? Are sweet. Mangoes are sweet. So are sweet is my predicate. That's the info. Jack exercises every morning. Who am I talking about? I'm talking about Jack. So Jack is my Jack is my subject. And what is the information about subject about Jack? Exercises every morning. So all of it exercises every morning. All of it is my predicate. I get up early. Who am I talking about? I'm talking about I. किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? अपने बारे में. I. So ये subject हो गया. और मैं क्या मालूमात फराहम कर रहा हूँ अपने बारे में? Get up early. Get up early is the predicate. ये वो information है, ये वो मालूमात है जो हम इस जुमले में दे रहे हैं. तो हर जुमला, every sentence that you say has a subject and has a predicate in it. हर जुमले के अंदर एक ज़ाहिर सी बात है, चूँकि वो जुमला है, वो कोई बात है किसी के बारे में, मुकम्मल एक थॉट है, तो वो लाज़मी तौर पे उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। किसी न किसी के बारे में होगा वो जुमला और उस जुमले में कोई ना कोई बात बताई गई होगी। तो जो बात बताई गई है, वो है प्रेडिकेट और जिसके बारे में वो जुमला है, वो है सब्जेक्ट। ये अहम चीज़ है, अपने ज़हन में रखना, रियली इम्पोर्टेंट। आप बोलना चाहते हैं ना, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो जब ज़हन में ये बात क्लियर होगी कि भाई हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। हू आई वांट टू टॉक अबाउट, व्हाट इज़ माय सेंटेंस अबाउट, हू इज़ माय सेंटेंस अबाउट, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। एंड द सेकंड थिंग इज़ what is the information I want to provide about this person or this thing in my sentence. अब ये 2 चीज़ें जब आप कहते हैं ना भाई इंग्लिश कैसे बोलें, सर इंग्लिश कैसे बोलें? भाई इंग्लिश ऐसे बोलें। सबसे पहले तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि आप बात किसके बारे में कर रहे हैं। अब ये कोई आके तो आपको बताने से रहा, मैं आके बताऊँ, भाई देखिए आपने ये बात करनी है, हाँ सान आपने ये बात करनी है, हाँ सहर आपने इस बारे में बात करनी है, कोई आगे थोड़ी बताएगा, ये तो आपके ज़हन में खुद से होना चाहिए। Who you wanna talk about? You wanna talk about yourself, you wanna talk about your dad, or you wanna talk about your school or whatever you wanna talk about. You should know it. You're the one who wants to talk. And then you should know what you want to talk about. What is the information that you want to provide about that person or that thing or that place. अब ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि आप किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं और अब क्या मालूमात फराहम करना चाहते हैं। ये 2 चीज़ें हैं, इसलिए हमने इसको सबसे पहले स्टडी किया है। आगे टेंसेस क्या होते हैं और वो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, पता नहीं दुनिया ज़माने की चीज़ें क्या होती हैं, वो तो जो होती हैं वो होती हैं। वो बहुत बात की बातें हैं। आई मीन दैट जस्ट टू फार। This is your base. This is the most important thing, which people don't think it's important. Like people, a lot of students think that it's nothing, it's not important, while it is. ये बहुत अहम चीज़ है। इस चीज़ का समझना, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ये बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ना कोई मुश्किल थोड़ी है, मतलब आप आगे बढ़ते चले जाएँ और पीछे कुछ भी नहीं है, रास्ता पूरा सब खाली है, कुछ नहीं पता क्या किया हमने पहले। तो I think that's the end of today's session. I mean, this thing only, grammar topic. So if you have any questions, put them in the Q&A tab. And if you're watching on YouTube or Facebook, you can join this class, okay? By clicking the link, it's in the description. Pretty easy. Just enter your name and your email address. You'll receive a link, a unique link in your email inbox. If you don't find that link in your inbox, it might have landed your spam or junk or promotions folder or any other folder. So you should just make sure that you check those other folders if you don't find the link in your inbox. So Adil says nobody's told me that predicate is important. Predicate is important. Knowing what a subject is important, ये चीज़ें देखें अहम हैं। ये दोनों चीज़ें जानना अहम है, हर वक्त आपके जहन में होना चाहिए। जब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपके लिए देखें इंसान को कॉन्फिडेंस आता है। कोई चीज़ मालूम होती है, आपसे कोई आपका नाम पूछे, आप फौरी झट से बता देंगे, सोचेंगे थोड़ी मेरा नाम क्या है पता नहीं, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ घर पे, ऐसा थोड़ी करेंगे। किसी ने आपको पता है ना कि इसमें गलती नहीं हो सकती, कॉन्फिडेंट, राइट? यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। सो व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन यू नो अबाउट स्टफ, व्हेन यू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स, सो यू आर कॉन्फिडेंट and confidence makes it easy for you to speak and communicate. So जनाब मैं questions देख लेता हूँ. Doer of an action is called an agent. Doer of an action, yeah, definitely that's another name for doer of an action, but like I said, the subject is not just the doer of an action. Okay, subject is not the doer of an action, it's who or what you talk about. That's what the subject is. Okay, guys, so what I'm going to do is that now I'm going to share a link with you, okay? And you're going to take a class quiz.
अब होता क्या है, हम क्लास जिस तरह होती है, जिस वक्त ये क्लास हो रही है, ठीक है? So this is what we're going to do. You are going to take a quiz now, and I'm going to share a link really quick. Just give me a second. And okay, so there is a link to a quiz, and it's in the chat. Everybody, please make sure that you have the link. Just confirm if you have got the link. You see the link. Zubair says agent is part of the. You, no matter how many names you give this thing, like doer of an action, its agent is like, doer of an action. You just said that, right? And I agree with you. But subject, this is what we're studying, right? You don't need an agent in a sentence. You need a subject in a sentence. Now, if you want to give it names, no matter, I mean, different names, yeah, you can give it any names. But the thing is, it's the subject. Now, there should agent for agent, and that is you consider the doer of an action. So, what about sentences where there's no action, right? So, just stick with subject and predicate. Keep it simple, right? Don't make it complicated. सर हाउ आई गेट द लिंक इज ऑलरेडी इन द चैट चैट की टैब पे जाइए चैट का आपको लिंक मिल जाएगा उस पर लिंक पे क्लिक करें और उसके बाद आपके सामने एक लिंक जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्विज आ जाएगा मैं आपको क्विज दिखाता हूँ एक मिनट ओके यू सी दिस सो this is where you enter your name. It's a quiz. देखें क्लास में हम करते हैं क्या है we study a topic. हम कोई टॉपिक स्टडी करते हैं फिर एक क्लास में क्विज होता है ठीक है अब जैसे ये क्विज है अब पता चलेगा कि किसको कितना समझ में आया तो जल्दी से हमारे पास टाइम नहीं है वक्त हमारे पास कम है we don't have enough time it's a 1 hour class so I want you to click the link just click the link and take the quiz enter your name and then you'll be asked for your email address I think or maybe not. Yeah, you are. It's not necessary, but it's important that you enter your email address so that I could identify who that person is. Okay, you enter your email address, whatever that is, and then continue. Okay, so please do that really quick. I don't have enough time, and yes, just hurry up. Okay, so this is the live data that we're looking at, and okay, so Adil says I have done. Yes. What about the rest of you? So the link to the quiz is in the chat. Go to the chat tab, click the link, and take the quiz. Okay. Just make sure that you submit your quiz results. Okay. Just make sure that you submit your quiz results. अपने जो quiz results हैं वो ज़रूर submit कीजिएगा. Okay. Seher says sir done. Zubair okay I done quiz and Hassan says done. Good. Momin कह रहे हैं sir link is not opening. What browser are you using? You should be using the Chrome browser. Okay. Use the Chrome browser. Link is not opening. Like I said, use the Chrome browser. You can copy the link and then paste it in your browser. Try doing that. That might work for you. Yes, please. Okay, so what I'm going to do is that Sam is a doctor. Now, Sam is a doctor. This is the first one. I hope that all of you can see my screen.
Okay, so yeah, there it is. Sam is a doctor. Who are we talking about? Sam, right? So Sam is the subject. Those boys are playing soccer. Who are we talking about? Those boys. So the subject is those boys. My dad is a lawyer. Who am I talking about? My dad. So the subject is my dad. Next one, my brother and I will attend the party. Who am I talking about? My brother and I. Not the party, okay? Not talking about the party, talking about my brother and I. They stole a car. Who are we talking about? They. So the subject is they. Not a car. Not no, we're not talking about stole. Teachers help you learn something. Identify the subject. Who are we talking about? Teachers. So that's your subject. Teachers. Help is not your subject. You is not your subject. No, that's not right. Last week was full of fun. What are we talking about? Last week. So everybody got it right. Yeah, that's right. Last week was full of fun. A computer is a machine. What are we talking about? A computer. So a computer is your subject. Machine? No, that's not your subject. Is? No, that's a verb. That's not your subject. Pakistan is a developing country. So Pakistan, what are you talking about? किसके बारे में बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के बारे में. तो subject क्या हो गया? Pakistan, right? Country नहीं, developing नहीं. So okay, 20%. 20 marks किसने हासिल किया जनाब? How many? Okay, 1%. 50 marks, one person. Okay, three persons, people, 4.76%. 80 marks, 5.95, and 90 marks जिन्होंने हासिल किया जनाब 26.19%, और 100 marks जिन्होंने हासिल करे हैं वो हैं 57.14. That's wonderful. That's not bad. That's really good. Okay, now what I'm going to do is that I'm going to share another link with you of another quiz. We've got another quiz. So the link to the quiz is in the chat. Yes, please. There's another quiz for you. एक और quiz कर रहे हैं इस वक्त हम, और वो chat में मौजूद है. उसका link. Okay, guys. So just let me share my screen. Okay. I'm gonna share my screen really quick, and okay. So I'm sharing my screen now. So this is a second quiz. Okay, Mary says done. Uh, okay, good. Yes, please, everybody. Please click the link, take the quiz. Running out of time, don't have much time. Just make sure that you take the quiz as quickly as possible. You just need to select the right option, right? You don't have to type anything. आपने सिर्फ सही जवाब जो है वो सेलेक्ट करना है, कुछ टाइपिंग नहीं है इसके अंदर. So just remember that the second quiz is actually about subject and predicate both. So in some questions you might be asked about, you might have to identify the subject, and in some sentences you might have to identify the predicate in it. So just make sure that you read it carefully before selecting anything. Okay. Okay. Adil says just one mistake. Okay, missed by mistaken. Submit, Sir Muhammad Nabi says. Hina says got 80%. Wonderful. Zubair says done. Hassan says done, sir. Okay, good.
Okay, so I'm going to share the live results, and I am sharing the live results right now. So the sun rises in the east. Identify the subjects. What are a subject? What are you talking about in this sentence? The sun is your subject. In the east and rises, no. Every door opens to a smile. Identify the predicate. So what are we talking about? Every door. So that's our subject. And what is the information? Opens to a smile. Opens to a smile is your predicate. So 74.9559. A lot of students, they selected this option, which is pretty good. Gold is a precious metal. So what's the predicate? What are we talking about? Gold. And the rest of it is our predicate. So is a precious metal is your predicate. The sailor's home is on the sea. So the sailor's home is on the sea. Identify the subject. What are you talking about? The sailor's home. So that's your subject. Is on the sea is not your subject. Flowers grow in the fields. Next one. Flowers grow in the fields. Identify the predicate. So the predicate is, what are you talking about? Flowers. The rest of it is your information. Grow in the fields. That's your predicate. The maple leaf is an emblem of Canada. What's the subject? What are you talking about? किसके बारे में बात कर रहे हैं? The maple leaf. Have you ever seen the flag of Canada? It's got a leaf. So that's your maple leaf. Okay. So the subject is the maple leaf. Who is the author of that book? किसके बारे में बात हो रही है? Subject को identify करना है. Who is the subject? Okay. Who is the author of that book? Who is the subject? यानी सवाल है ये और उसमें subject क्या है? Who. So that is your subject. So the next one is the city of Ottawa. Ottawa is the capital of Canada. Find out the predicate. So what's the predicate? Is the capital of Canada. That's your predicate. Next one, all the children were gathering flowers. All the children were gathering flowers. What's the subject? What are we talking about? All the children. All the children. That's their subject. And the last one is John Cabot discovered Canada in 1947. Oh, 1497, 1947. Sorry. 1497. That's your predicate. Okay, so identify the predicate. Discovered Canada in 1497. That's your predicate. And John Cabot, that's your subject. Okay, so let's look at the quiz results. Let's look at the stats. 30 and 8 got 50, 60 only 3, 70 got 10, and 17 got 80, and 90 got and 24 got 90, and 19 got 100. Good for you guys. Okay, so I'm gonna stop sharing my screen now, and the next thing here is okay. So let's look at your questions. Okay, so you see, when you're done with your quizzes, so you need to tell me in the chat. Don't use the Q&A tab only for questions. अच्छा जी, बाकी सवाल कर रहे हैं where I'm from, कराची. मैं इसमें है, मैं प्रोफाइल के अंदर आप देख सकते हैं. I'm from Karachi. Okay. Hassan says I got 90%. Wonderful. So now, guys, this is about today's topic, subject and predicate. Now I'm gonna tell you more about um, something, and that is, give me a second. I'm going to share my screen. I'm going to show you something. Okay, guys, so this is our online academy. Okay, I'm sharing my screen. I want you to confirm if you see it. जी जनाब, अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो मुझको बताइएगा प्लीज़. अच्छा जी, राज वली पूछ रहे हैं, सर हाउ मेनी लेवल्स ऑफ दिस कोर्स? देयर आर सेवरल लेवल्स. There is an elementary, beginner, and lower intermediate, intermediate, upper intermediate, advanced. So there are a lot of levels. Okay, just make sure that you put your questions in the Q&A tab like you just did.
Okay, I'm sharing my screen, and this is what you see. Now, this is the academy. This is the online academy where the real magic happens. Now, this is an online class, what you're taking. So, this class, right, is just a class. But what you need is practice. So, uh, this is where you get all the practice. Now, you need to improve. If you want to improve your reading, you need to improve your reading. You need some reading exercises. Now, I'm going to show you the course content here. Just want to make sure that all of you are with me and you can see my screen. And I'm currently sharing a web page from our online academy. I just want you to confirm that you see it. आपको वो नजर आ रहा है? Thank you very much. Okay, thank you. Now this is the online academy, right? And I'll share with you a link shortly. Now, this is the place where you go and you take these, do these lessons, listening lesson. You can see there's a lesson, the grammar lesson that we just did, subject and predicate, right? This is a sample lesson. You have access to it. Reading, and then we've got a reading lesson. Now, you want to improve your reading, right? You want to improve your listening. So you can see there's a listening lesson, there's a reading lesson, there is a lesson about vocabulary, there is a video. Now, a lot of you have problems in understanding native speakers. For that, we've got videos. And all of these lessons, be it a reading lesson or a listening lesson or a vocabulary lesson, all of these lessons, they come with quizzes, accompanied with quizzes, right? So why do we have these quizzes? Because we need to make sure that you are actually improving your reading. And if you're not, the quiz is going to tell you, your marks are going to tell you your improvement in that particular lesson. Now, we also provide dialogue practice. You see, dialogue practice. Now, you want to improve, yeah, the way you speak English, you want to improve your pronunciation, you want to improve your accent. ये सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं, तो ये सब करके होगा। ये सिर्फ क्लास लेने से नहीं होगा। क्लासेस तो आप सारी ज़िंदगी लेते आए हैं अब तक, है ना? स्कूल में आपने सालों क्लास ली है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। ये जो चीज़ें करने की हैं, ये काम जो करने का है, this is what you need to do in order to improve your reading, your listening, your vocabulary, your pronunciation, your accent. Everything needs practice. जब जितनी जल्दी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये करके ही हम इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। क्लास लेने से, क्लास तो एक तरीके से गाइड है, एक गाइडलाइन है। इस क्लास में एक चीज़ आपको सिखाई गई, अब उस चीज़ को इम्प्रूव करना, उसमें उसमें जो है वो आगे बढ़ना, उसमें महारत हासिल करना, ये वो काम है जो आपको करना है। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो सारी ज़िंदगी, ज़ाहिर सी बात है, फिर इंग्लिश नहीं आएगी। सिर्फ क्लास लेने से कुछ नहीं होता। ठीक है? You need to work hard, you need to practice, you need to work on your reading. If your reading is not good, work on your reading. So now I'm going to take you how we work on improving uh, your reading, your listening, your vocabulary, your pronunciation, your accent. How do we do that? ये हम कैसे करते हैं? easyenglish.pk पे इस ऑनलाइन क्लास के अंदर, ये ऑनलाइन क्लास दूसरी ऑनलाइन क्लासेस से क्यों मुख्तलिफ है, ये है वो वजह। ये क्लास जो आप ले रहे हैं इस वक्त, उसको यानी जब क्लास में मौजूद है जैसे वक्त आप, तो आप खुद से देख रहे हैं कि किस तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं। तो आपके लिए फैसला करना आसान होगा कि आप हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये क्लास किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है और पहुंचा रही है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस क्लास का असल मकसद है। तो मैं चलूँगा यहाँ पे, जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, ये लेसन है, ठीक है? हम इस पे अगर क्लिक करते हैं तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे एक तो जो लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर, ये अवेलेबल है यहाँ पे। दिस इज़ व्हाट्स अवेलेबल, यू कैन वॉच द होल सेशन. You can watch the replay on the AirMeet app. You can also watch just this particular part. You can watch the class recording here by clicking on this video, this button, play button. And you can also download the handout in the form of PDF. अच्छा, ये जो presentation आपने अभी देखी थी, अच्छा होता क्या है क्लास के अंदर, a lot of students they just begin to write down everything. You don't need to write down anything. You can download this handout. Let me show you this handout. So हमारे पास क्या होगा, आपने कोई भी lesson किया तो अकेडमी पे आप उसका handout डाउनलोड कर सकते हैं रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो जैसे मैं हैंडआउट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? और आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन राइट नाउ. Just give me a second. Okay, yeah. Now I'm sharing this PDF format, this handout. The presentation that I just used, this is it's in the PDF format. This is what you'll get from the Academy website. ये आपको Academy की वेबसाइट पे आपको ये चीज़ मिलेगी। वहाँ का एक्सेस जब आप हासिल करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी। खैर, जो शुरू का जो
जो यूनिट है यानी कि वो फ्री है, आप उसको एक्सेस आपके पास है, आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं ये पूरी वही प्रेजेंटेशन है, इट्स द सेम प्रेजेंटेशन, इट्स जस्ट इन द पीडीएफ फॉर्मेट। यू कैन डाउनलोड दिस प्रेजेंटेशन एंड कीप इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आप इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, जब भी आपको कभी परेशानी हो, कोई मसला हो, आप इसको जाके देख सकते हैं, या महीने में, हफ्ते में एक जगह एक दफ़ा जाके देख लिया, ताकि वो चीज़ महफूज रहे। होता क्या है जी, वो यू नेवर गो बैक टू इट एंड यू नेवर रिवाइज दिस स्टफ। सो दिस पीडीएफ फॉर्मेट हैंडआउट इज गोना मेक इट ईजी for you to revise whatever you've learned so far in English. So इस तरीके से आपको ये जो है वो हैंड आउट आप डाउनलोड कर सकते हैं. Okay, I'm going to come back to the previous tab. Yeah. So here you can see there are quizzes again. So these quizzes are your academy quizzes. आप इस पे click करेंगे, so there will be another quiz. Okay, I just clicked on the quiz and I'm going to click on this one. So another quiz is going to open for me in another window. Okay, like you can see it's loading for me right now. So आपको जैसे नज़र आ रहा है क्विज जो है दूसरा ओपन हो गया, तो ये सब अकेडमी के अंदर मौजूद है. अब यहाँ पे एक और क्विज है मेरे पास, ये थोड़ा डिफरेंट है. ये जो क्विज आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्टार्ट क्विज करूँगा, इसमें नेम और अपना ईमेल एड्रेस मैंने एंटर किया जनाब, और उसके बाद सबमिट करूँगा. सो नाउ आई हैव गॉट अनदर क्विज हियर. नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट क्विज. ये क्विज डिफरेंट है. इसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से आपसे ऑप्शंस हैं. इसमें आप खुद लिख भी सकते हैं, इसमें टाइप इन भी करना होता है, चूज़ द बेस्ट आंसर्स भी होता है इसके अंदर. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हियर. So, for example, look at the sentence below and tell whether the bolded part of the sentence is the subject or the predicate. So, I don't like carrots. What do you think it is? Don't like carrots. This is the bolded part. इसमें क्या है ये? Subject है या predicate है? क्या लगता है आप लोगों को? जी जनाब, what do you think? What is it? Is it a subject or is it a predicate? नो, द बोल्डेड पार्ट. बोल्डेड पार्ट की बात कर रहा हूँ, है ना, कि जो बोल्डेड पार्ट यानी जो मोटा हुआ है, बोल्ड कहते हैं मोटा करना है ना, मोटा कर देते हैं जिस किसी भी टेक्स्ट को, आप उसको कहते हैं बोल्ड. तो ये बोल्डेड पार्ट जो है वो क्या है? प्रेडिकेट है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह के क्विजेज अकेडमी पे मौजूद होंगे. आपने सेलेक्ट किया और आप इसको सबमिट करेंगे. जैसे सबमिट करेंगे, you'll get the response if it is right or if it is wrong. आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, एंड द सिस्टम विल टेल यू if you were right or if you were wrong. So I'm going to go back to the academy website. मैं दोबारा वेबसाइट की तरफ जाता हूँ और okay. Now this is here. The next lesson is a reading lesson, right? After the grammar lesson. So grammar हमने academy पे हमने online class में whatever you did, you learned what it is and everything about the topic, and then you go to the academy website and then you take more quizzes over there for further practice. Now reading, how to improve your reading. अच्छा, होता क्या है रीडिंग के अंदर जनाब, जब अच्छा यहाँ पे देखें रीडिंग लेसन है माई लिटिल सिस्टर. दिस इज इन यूनिट 1. क्लिक ऑन दिस. Now you can see this is the reading lesson, right? Now what happens in school में क्या होता है, your teacher actually has that person who is good at reading. The student who's good at reading is usually asked to read, and that person, that student reads, and that's it. The whole class doesn't read. पूरी क्लास से तो रीडिंग ही नहीं करवाते. जो स्कूल में होता है ना, उनके बेचारों के पास वक्त ही नहीं होता, कहाँ से रीडिंग कराएंगे. सबकी रीडिंग, वो जो सबसे अच्छा बच्चा होता है या बच्ची होती है क्लास के अंदर, उसी को खड़ा करते हैं, बेटा तुम जल्दी से पढ़ लो जरा, ये पैराग्राफ तुम पढ़ लो, ये पैराग्राफ तुम पढ़ लो. बस जो बच्चों की रीडिंग अच्छी होती है उन्हीं को खड़ा करके जल्दी जल्दी रीडिंग करवा देते हैं. एंड दैट्स इट. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जिनके साथ असल जो मसला है, जिन स्टूडेंट्स के साथ, उनकी रीडिंग कैसे अच्छी होगी भाई? उनको तो आपने कभी हाथ ही नहीं लगाया, उनसे तो कभी आपने कहा ही नहीं कि बेटा आप भी खड़े होकर पढ़ लें. क्यों? अगर कोई बच्चा गलतियां करता है तो फिर क्या होता है, टीचर को, भाई कम ऑन, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, दैट्स इट, यू नो, कैन गिव यू दैट मच टाइम, कैन गिव यू दैट मच अटेंशन. तो ये वजह है कि रीडिंग स्कूल में हो ही नहीं, आपको करवाई नहीं गई, तो इसलिए आपको रीडिंग नहीं आती है. इसमें आपका मसला नहीं है, ये उस जगह का मसला है जहाँ से आपने पढ़ा है. रीडिंग आनी चाहिए आपको, क्योंकि आपसे करवाई नहीं गई. अच्छा देखें, तो अब ये जो अकेडमी वेबसाइट पे आप जाएंगे, रीडिंग लेसन है. अब आप ये, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट गुड एट रीडिंग? How many of you feel that you've got difficulties, you don't know the right pronunciation of a word? आप में से कितने ऐसे जिनको मुश्किल लगता है रीडिंग करना, रीडिंग में नहीं हो पाती या मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं? कितने लोगों के साथ रीडिंग का इशू है? जी, चैट में मुझे बताइएगा. कोई मसला नहीं है, अगर बता देंगे. कोई यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं उनके साथ मसला है. कोई कोई लोग मसला है ना, जब भी यहाँ पे मौजूद हैं. अगर कोई मसला नहीं होता यहाँ पे थोड़ी मौजूद होते, कहीं और होते फिर वो, राइट? ओके, सो मैंने पूछा है
प्रॉब्लम किसके साथ है? तो मोहम्मद नवीद ने उठाया, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. अच्छा, how do we improve your pronunciation? How do we improve your reading? What's gonna happen? Do you see now this unit, this lesson, this reading lesson comes with a quiz. आपको नजर आ रहा होगा एक क्विज है, बटन है, रीडिंग प्रैक्टिस है, ठीक है. इसमें आपको रिकॉर्डिंग करनी होगी, अपने आप रिकॉर्ड करेंगे आवाज़ खुद की, जो फिर हमको रिसीव होगी, हम उसको एनालाइज करेंगे आपकी रीडिंग इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है. इसके अलावा देयर इज अ क्विज दैट यू सी अबाउट दिस रीडिंग लेसन. Let me click. So when you have read it, you click on the quiz, and then there will be a quiz about this reading, right? Zubair says I have issue of reading and pronunciation issue, right? Get it? No. Now, after you've read something, then it's time to take a quiz and check your reading skills. आपने एक लेसन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद अब आपने एक क्विज आप उसके बारे में करेंगे. इससे पता चलेगा कि आपकी रीडिंग कितनी अच्छी है, आपको कितना समझ में आया है वो जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है, how much you actually understood. So this quiz is gonna tell you that, right? So now अभी फिर हम दोबारा इस बात पे आते हैं कि भाई रीडिंग कैसे इम्प्रूव हो. दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि रीडिंग कैसे इम्प्रूव होगी, है ना. सोच रहे होंगे ना कि भाई रीडिंग कैसे इम्प्रूव होगी, पढ़ेंगे कैसे. अब आपको, डू यू सी दिस बॉय होल्डिंग अ बुक एंड दिस रेड पल्सेटिंग बटन. आपको नजर आ रहा है, बच्चा नजर आ रहा है, किताब पकड़ा हुआ है और ये बटन है रेड कलर का. इसको इसको नजर आ रहा होगा, सबको नजर आ रहा है. प्लीज कंफर्म कीजिएगा अगर आपको नजर आ रहा है. डू यू सी दिस बॉय होल्डिंग दिस बुक? डू यू सी द बॉय? Good. Now, in order to improve your reading and a lot of other things, and I just want to show you what this is equipped with. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अकेडमी पे जो सारा स्टफ़ है, इसमें कितना पावरफुल स्टफ़ मौजूद है, ये मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ. और मुझे मुझे अच्छा खासा यानी कि यकीन है कि आपने इस तरह की चीज़ शायद पहले कभी नहीं देखी होगी. तो जनाब, जैसे ही आप देखें, आप इस बटन पे, as soon as you click on the button, the red pulsating button that you see here, ये जो बटन आपको नजर आ रहा है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक विंडो पॉप अप होगी, ठीक है. डू यू सी दिस आइकॉन, दिस small icon on the right that looks like a book and a speaker? That icon, you click on that icon. या आइकॉन नजर आ रहा है आप लोगों को? इस आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे जब, okay, let me click, and then another window will open in front of you. Now you see this is the whole text. This is the same text that was written, right? It's the same text. Now, what can you do here? अब आप ये कैसे improve कर सकते हैं? Click on the word. Wait a minute. Let me stop sharing my screen. I'm gonna reshare my screen. I wanna share computer sound as well. So where is it? Okay, now I'm sharing my screen again. It's gonna take longer today, okay? And so just bear with me, okay? I won't take much of your time. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका. थोड़ी सी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ और इसलिए बस जल्दी-जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए. बाकी ये कि जब आप खुद अकेडमी पे जाएँगे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएँगी. बाज़ औक़ात चीज़ नई होती है, सो आपको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से उसको करना है. तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है? अब रीडिंग कैसे इम्प्रूव करनी है, मैंने आपको बताया था. फिर दोबारा मैं पीछे जाता हूँ, इसको 1 मिनट. देखें, आपको ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, you can't read it. For example, or maybe there's a specific word that you can't pronounce. हो सकता है ये लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, इसको ये देखें, ये लफ्ज़. Look at this one. Let me zoom in a little bit. Do you see this word, the one that I've just highlighted? This word, इसको आमतौर पे, this is mispronounced usually. How do people usually mispronounce? A lot of people pronounce it like plumber. It's not plumber. The right pronunciation is actually plumber. There is no b sound in it. Plumber. That's the pronunciation. इसकी जो pronunciation है वो है जनाब plumber है. इसको बहुत सारे लोग प्लम्बर पढ़ते हैं. मुझे पूरा यकीन है कि इस क्लास के अंदर भी अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको प्लम्बर पढ़ते होंगे. So that's what you need. You need to improve your pronunciation. You think that you know the right pronunciation. Sometimes that's not the case. Sometimes you are mispronouncing a word and you just don't know that you mispronounce it. तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको रीडिंग इम्प्रूव करनी है, अपनी प्रोनाउंसिएशन मालूम करनी है, जो भी चीज़ है, एक जो बच्चा है, इसके ये बटन है, इसके ऊपर क्लिक किया, फिर ये आइकॉन है, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है ऑन द राइट. क्लिक ऑन दैट आइकॉन. अच्छा, इसको आइकॉन बोलते हैं, इसको आइकन नहीं बोलते. आप वीडियोस देखेंगे कि तो वो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे नज़र आता है, आइकन आइकन बोलते हैं. इंडिया वाले भी बोलते हैं, पाकिस्तानी बहुत बोलते हैं आइकन. तो आइकन नहीं है, वो आइकॉन होता है. इस बारे में भी आगे चल के बात करेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही क्यों है और जो दूसरे बोल रहे हैं वो गलत क्यों है.
ठीक है, ये भी इस पे हम आगे बहस करेंगे चंद दिनों में आगे चल के, जब प्रोनाउंसिएशन के ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे. So now this is what I'm sharing. So now let's say you don't know how to pronounce this word. You click on this word, and then you can click on this speaker that you see. Let me zoom in if it is possible. Let me zoom in. Yeah. So you see, click on this. Little. Little. You see, I can hear it. Did you hear that? Did you hear that? I just played it. Did you hear that? आपको आवाज़ आई? अभी मैंने जिसको प्रेस किया, इसको प्ले किया, तो आपको आवाज़ आई? बिल्कुल, अच्छी बात है. Okay, now let's listen to this. Sister. Sister. Allowed. Allowed. You see now, if there's a word, okay, where is plumber? कहाँ गए plumber? Yeah, Plumber. 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 you see, I was right. You see, so this is how you figure out the right pronunciation of a word. You don't know how to pronounce something, a word. You click on that word and you can listen to its pronunciation. Sister. 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 Okay. Front. So it also comes with a picture dictionary. You see, comes with a picture dictionary. You can see the picture, what it means. Now I'm going to tell you more about it. Let me zoom out a little bit. Now this is the whole text, right? You can also listen to it. You click on this, and now listen to it. My little sister. My little sister is not allowed to open the front door. If someone knocks on the front door, You see, this is how you can listen to it, to the whole text. You can listen to an individual word. You can also listen to the whole text like that. And there are some controls. You can come here to voice settings. You can increase the voice speed. For example, this is the normal speed. Let's play it one more time. door, she says, who is it? But she never opens the door. इस तरीके से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं. फीमेल वॉइस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. Door. My parents told her never to open the door for anyone except for her family You can also decrease the speed like this. members. Somebody knocked on the door yesterday. Right? So My sister asked, who? okay. So this is how you control the speed. You can click on an individual word. You can also listen to its pronunciation like this. You can also see what it means because it comes with a picture. Usually a lot of words usually comes, they appear with what they mean in the form of a picture. Okay. Now the next thing, what else you can do? Look at this, grammar options. Okay. Reading preferences. Let's click on that. You can do the line focusing thing. You can focus just one line. You can focus 3 lines. You can focus 5 lines, or you can focus the whole text. You can turn on the dictionary, or you can turn it off. See, if I turn it off, so I don't get anything. You see, nothing. But if I turn it on, then I see the pictures. You see what they mean. This is how you improve your, if you don't know what a particular word means, this is how you improve. Just keep it turned on. Translation, I don't recommend translation. I'm not a huge fan of translating things. I believe that when you look at a, you know, thing or a picture, you don't need to translate it. Translation, I don't like translation. But अगर आपको कोई ऐसा लफ्ज़ है जो कि जिसकी पिक्चर मौजूद नहीं है और आपको उसके मायने मौजूद नहीं है, तो आप ऐसी सूरत में ट्रांसलेशन की तरफ जा सकते हैं. आपको उर्दू के अंदर भी कर सकते हैं. देखें, इसमें बहुत सारी ज़बानों के अंदर अवेलेबल है. देखें, सी, फैमिली, घर, members are gone. But I don't like this, right? I'm just telling you that I don't prefer this. I don't recommend this. It's only if you need it, like it's really important, only in that case. ठीक है, अगर बहुत ज़रूरी हो तब आप इसको इस्तेमाल करें, वरना इसको ऐसे रहने दें. Text preferences, you can change the color, the size of the text like this. It's possible. And you know what, you can do this on your phone, your cell phone. It's possible. You can do it on your PC. So this works on every device. ये चीज़ जो है हर डिवाइस पर काम करती है. ठीक है, you can even change the text, the font, and the background. That's also possible, right? And let's go back to grammar options. Let's look at this one. ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, जो grammar ऑप्शन है. अब टेक्स्ट है. अब आपको नहीं पता कि भाई इसमें syllables में कैसे तोड़ें. syllables पता है ना आपको? syllables, for example, sister, so sis and ter, 2 syllables. So you can also break every word into syllables. हर word को आप इस तरह syllables में you can break them down. Every word you can break it down like this. Now, okay, now let's say parts of speech. Now you know that every word belongs to a specific part of speech. कोई भी लफ्ज़ हो वो किसी ना किसी part of speech को belong करता है.
लाजमी तौर पे। तो आप उसमें अगर आप जानना चाहते हैं कि इस टेक्स्ट में what are the nouns in this text, see, highlighted. So everything that you see in purple, that is a noun. Sister is a noun, door is a noun, family members, nouns, problem, noun, person, noun, side, noun. Turn it off. Okay, you can even change the color if you want to, right? Verbs, आप जानना चाह रहे हैं what are the verbs in this text? Is, verb, allowed, open, opens, said, was, will come, couldn't open. All of these are verbs. You want to know what are adjectives? Everything that is in green, little, is an adjective. Front is an adjective. Other is an adjective. All of these are adjectives. Adverbs, you want to know adverbs? Click on that. Now, everything that you see that is in brown, not is an adverb. Never is an adverb. Adverb. Yesterday is an adverb. Back tomorrow, that is also an adverb. So you can turn all of these on. Now you see everything. What's what? What's the function of each word? आपको नजर आ रहा है कि हर वर्ड किस तरीके से काम कर रहा है। तो आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है कि इसमें आपको बताया जाए कि कौन सी चीज़ इसमें नाउन है, कौन सी चीज़ वर्ब है। ये उन लोगों के लिए who are really interested in the way, about their grammar, improving the way they read or pronounce a word. So, got any questions about this? So this is the place where you can come and you can play with it. And really quickly, I'm going to share. And then there is a quiz, like I said before. Take a quiz, and there is a reading practice where you can actually record yourself. Let me show you. So it's all about improving the way you speak. आपकी improvement जो है, I'm going to share my screen now. So you see this? I'm sharing my screen, and as you can see here, you are going to record. Enter your email address. Okay. Now here you need to read. You can record your voice. ये वो जगह है जहाँ पे आप इसको बाकायदा रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे, और इसको पढ़ के आप इसको यानी इसको पहले रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे, जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ जनाब। ठीक है। My little sister is not allowed to open the front door. If someone knocks on the front door, she says, "Who is it?" But she never opens the door. Okay, now listen to this. Oh. I wasn't okay now. My little sister is not allowed to open the front door. If someone knocks on the front door, she says, "Who is it?" But she never opens the door. But she never opens the door. And now, I if wasn't you're okay satisfied now. with it, just accept it and then continue. And then we'll receive your recording like that. So this also works on your phone, a cell phone, and your PC, tablet, whatever you're using, whatever device you're on. So I'll tell you more about this tomorrow, inshallah. I think that's all for today. And the link. I'm gonna share the link. Just give me a second. Just give me a second, please. Okay, now the link to this course is in the chat. What I just shared with you, reading and listening and all that, uh, click on that. Everything is there. The first unit is for free, totally free. I'm going to give you more information about how to get access to the academy. I'll tell you more about it, what else we provide there, and what you can do. So just play with it. Go to just save the link, please. The first thing you need to do right now is save the link, save it somewhere, and then you can use the link at any time, whenever you're free, after the class or whenever you have time, and then go to different lessons, read, do the reading lesson, do the listening lesson, and take quizzes and see if you're improving, if it's helping you, right? Take the dialogue practice lesson, take those lessons. Okay, now I'm going to go over head over to your questions. Sir, daily class or daily link please. Daily timing of class, Samina, class की timing तो यही है 7:45 से 7:45 to 8:45. And the daily link, no, you're gonna use the same link that you used today. जो लिंक आपने यूज़ किया था वही लिंक आप यूज़ करेंगे। लिंक चेंज नहीं होता क्लास का। जो आपके पास ईमेल में लिंक आया था जिसको अभी यूज़ करके आपने क्लास को ज्वाइन किया है, you are going to use the same link for the rest of the duration of the course. Okay, where we get the course outlets, there's no outlet. There's course materials that you will find on the academy website. The link to the website I just shared with you, it's in the chat.
Okay, what is the name of this website? academy.easyenglish.pk. It's already there. Okay, so have you got the link, everybody? Just confirm that you have saved the link. It's gonna be here even if I'm not here. I'm gonna end the session now, and just want to make sure that everybody has the link to the website, to the Academy website. Okay, good. Hassan has a question. Yes, Hassan. Hassan raised his hand and then lowered his hand. Okay, Samina, I would like you to, what if you're just saying thank you or stuff like that, just put all of that in the chat tab, right? Use the chat tab and put all of such kind of stuff there, and just make sure that only questions that if got any questions, you put those questions here in the Q&A tab. Okay, it's only for questions. Rabia Irshad keh rahi hai, sir, what is the website? I don't get the link. It's already here. It's here. I mean, let me save. Okay, let me share the link again. There you go. It's there. It's in the chat. How to save the link? I can't tell you how to save the link. Just copy the link and paste it somewhere. That's it. सिर्फ लिंक को कॉपी करें, उसको पेस्ट कर दें किसी जगह पे, बस इस तरह सेव कर लें. इस तरह है. लिंक को ओपन कर लीजिए, उसको बुक मार्क कर लीजिए, फेवरेट कर लीजिए उसको. That's how you save it. Link is not opening. It will definitely open. Where is the link? It's in the chat. मैंने बताया. Seher, it's in the chat. Chat में है link. आपको चैट में देखिए, चैट की टैब में देखिए, द लिंक चैट की टैब में जाके आपको नजर आएगा. ओके, सना कह रही है यस रिसीव, गुड. तो जो चैट है टैब, उसमें जाएंगे एंड देयर यू विल फाइंड द लिंक. So guys, that's all for today. Tomorrow I'm gonna give you more information about the Academy website access, how to get access to that, and we'll do more. But tomorrow we've already run out of time. So it was really nice having all of you back today, and I'm gonna see you guys. Hopefully, I'm gonna see you guys tomorrow. देखें, ज़हन में रखें कि चूंकि इट्स अ फ्री क्लास, तो ये कोई कमिटमेंट नहीं होता आमतौर पे स्टूडेंट्स का. कहते हैं फ्री में तो है, चलो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे. बट द थिंग इज दैट इफ समथिंग इज फॉर फ्री, take it seriously. Okay, this is an opportunity for you to improve. You might not have seen such kind of classes before, might not have taken such kind of class before, so avail the opportunity, right? You've got this opportunity, avail it, learn something from it. It's for free, right? So that's all for today, guys. No more questions. Okay, sir, if you don't save the link, then how will we get access to the website? uh, just save the link, that's it. I will tell you more about that. Just right now, the unit 1 is for free. जो यूनिट 1 है वो फ्री है. आपको उसका एक्सेस हासिल है, सबको उसका एक्सेस हासिल है. आपने जो लिंक सेव किया है, जो लिंक पे ओपन करना है उसको, और आप जाके वहाँ पे उसको तमाम लेसन्स को खुद कर सकते हैं, अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था. बाकी ये कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो support@easyenglish.pk पे आप रब्ता कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो. अपना ख्याल रखिएगा. सी यू टुमारो. अस्सलाम वालेकुम.